this true religion, the Constitution, should be revered. The dignitaries are arriving on the dais. Please give them a huge round of applause. Dr. Revered Karad sir, Dr. Jagdish sir, Dr. Sanjay Upadhyay, Executive President Shri Rahul V. Karad sir, Dr. Akshay Malhotra, Dr. Dinesh Seth, and Dr. Mahesh Thorve. Today is a very phenomenal day. It is the fourth session of the 28th Philosopher Sant Shri Dnyaneshwara and Sant Jagat Guru Sant Tukaram Endowment Lecture Series. Today is also a very significant day because on this day, in 1949, the Indian Constitution, this day is celebrated as the Constitution Day. We call it as a Samvidhan Divas, also called as National Law Day. Every year this is celebrated. And on this day, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution, and which later came into effect from 26 January 1950. We all know that Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly and played a very pivotal role in drafting the Constitution of India, and he is reverentially regarded as the father of Indian Constitution. And various programs and events are organized on this day to promote constitutional values amongst its citizens. Today is also a day to take a pledge for the Constitution. The preamble is read all over India in schools, colleges, universities, and people take pledge to their allegiance to the constitutional values. So before we begin our session today, we also want to first mark the 15th year of the heinous attack on the city of Mumbai. In 2008, the very same day in truth, the terrorists from across the border, they, produced a mayhem there in the financial capital of India, Mumbai, and many people, innocent people, were butchered there. So to begin with, first, we will pay respect to these martyrs. And so I request all of us, before we begin to pay respect to them, we can stand and pay respect by standing 2 minutes in silence. Shraddhanjali ke liye. Everyone please stand, close their eyes. No. Close their eyes. 1 minute silence. Thank you. Please take your seats. Thank you so much. So today is a feast of the speakers. Yesterday also there were phenomenal sessions, topics, and the speakers, and it illuminated the hearts and minds of everyone. And today we ourselves is a person here. He is coming for decades here, Dr. Jagdish sir, and we all know that he speaks his mind, he speaks his heart. And today the heart is also going to speak about the heart also. As they say that the heart of the matter is that the heart matters the most. And so he is going to speak on preventing the heart attack. Dr. Jagdish sir, he is a world famous interventional cardiologist. He is currently director of the Cath Lab Ruby Hall Clinic, Pune. And as always, we know that he is going to enthrall the audience with his impeccable, with his straightforward speech and his direction. And we know that one of the significant part of his speech is that he speaks so lucidly, he speaks so confidently, and he don't advise. He just puts the plain facts, and that's why he is so revered, and his advice is so taken to the heart. So thank you so much, sir, for coming here all the way today. So before we begin our session, as per the 40 years long tradition of the MIT group of institutions, we will begin with the World Peace Prayer. This prayer is beyond caste, creed, race, religion, and
it was created 40 years ago by revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir for the benefit of the humanity and world peace. So I request everyone to please stand in their seats. They can stand in their seats. You can fold your hands, bring the image of the deity, mother, father, to whom you respect the most. Close your eyes and participate in world peace prayer. प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. Please take your seats. We always begin our sessions with the divine chanting of the primordial mantra, the Bija mantra called as Aum. The three-syllable A-U-M, they represent the three dimensions, the states of consciousness, Jagrat, Swapna, Sushupti. How beautiful that India has given to the whole humanity the two tremendous gifts, the Yoga and the Om. There is no parallel to this in the whole world everywhere. Just by chanting the mantra Om, if one can go beyond mind, beyond space, into the realm of the ultimate reality, how blissful and how beautiful it is. Just what we need is the getting absorbed into that celestial sound Om and meditating it for a few while. We know that in 2 minutes we can't attain that state, but at least we can get a glimpse of that, and we may want to do that again and again. So I request Professor Sandeep Digle, Assistant Professor in the Department of Peace Studies, to give us the experience of Om. Thank you, sir. Our ancient wisdom says, Mano yatra viliyeta, pavanastatra liyate, pavano liyate tatra, manastatra viliyate. Breathing is lessened when the mind becomes absorbed, and mind becomes absorbed when the prana is restricted. So, let's take a short and sweet meditation. Gently close your eyes. Relax. Be comfortable in your seats. While we listen to the Omkara, try to bring your attention on your breathing. Everyone here is requested to participate in Omkara Dhyana. I request my technical team to play Omkara music.
just be there, experience the bliss, feel the divinity. परमपिता परमेश्वर ने आज फिर से एक सुबह हमारे जीवन में दी है और आज नया कुछ सुनने का, अनुभव करने का मौका हमें प्रदान किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को मन मन थैंक यू बोलेंगे। जेंटली रब योर पाम्स, create energy and gently apply that on your face and eyes. Thank you so much. Anugrahitosmi. Dhanyavadah. Thank you so much, Professor Sandeep. Thank you very much. From this year onwards, एक नई चीज़ हमने शुरुआत की है with the blessings of Professor Dr. विश्वनाथ जी कराड़ सर। हमारे बीच में एक बड़े विशिष्ट मेहमान मौजूद रहते हैं हमेशा। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी is a former Director General of the Film Division. He is also former Additional Director General of Doordarshan, and currently he is CEO of Vishwa Shanti Darshan Channel MITWPU. So एक नई जो परंपरा अभी शुरू होने जा रही है वो ये है कि एक छोटी छोटी कहानियों से जीवन के प्रति जो बहुत बड़े जो संदेश है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। तो थिंक इट ओवर, नीति की लघु कहानियाँ ज़रूर लघु है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। और आज का जो कहानी है वो है भगवान और पुजारी। तो आइए हम सब उस कहानी से कुछ सीखते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम और पुनः स्वागत है विश्व शांति दर्शन के इस अनूठे मंच पर। आप सुन रहे हैं नीति की अनमोल लघु कहानियां। चैनल के अधीष्ट, चैनल के जनक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ है। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां हर कोई खुशी से रहता था। गांव के लोग मंदिर में नियमित रूप से प्रार्थना भी करते थे। एक बार मानसून के मौसम में पानी बढ़ने लगा, भारी बारिश हुई, नदी और गांव में बाढ़ आ गई। सभी गांव वालों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। एक आदमी भागकर मंदिर गया और जल्दी से पुजारी के पास जाकर बोला, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। मंदिर में भी पानी प्रवेश करने लगा है। हमें यह गांव छोड़ना होगा क्योंकि कुछ ही समय में यह मंदिर भी पानी के नीचे डूब जाएगा। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल गए हैं। पुजारी जी, आपको भी साथ आना होगा। पुजारी ने उस आदमी से कहा, मैं तुम सबकी तरह नास्तिक नहीं हूं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने आएगा। मैं मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जा सकते हो। वो आदमी चला गया। जल्दी ही पानी का स्तर बढ़ने लगा और कमर की ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ मिनटों के बाद एक नाव वाला पुजारी को बचाने आया। उसने पुजारी से कहा, मुझे ग्रामीणों ने बताया है, गांव वालों ने बताया कि आप अभी भी मंदिर के अंदर हैं, इसलिए मैं आपको बचाने आया हूं। जल्दी से नाव पर आ जाइए। लेकिन पुजारी ने फिर से उसे वही कारण बता के आने से मना कर दिया। नाव वाला चला गया। पानी बढ़ता रहा और मंदिर की छत तक पहुंच गया। अब पुजारी मंदिर के शीर्ष यानी चोटी पर चढ़ गया और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि वो उसे बचाएं। जल्दी एक हेलीकॉप्टर आया। उसने पुजारी के लिए एक रस्सी की सीढ़ी गिरा दी। उस पर चढ़ने के लिए हेलीकॉप्टर के अंदर आने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने पायलट को फिर से ये कह दिया कि नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे, और जाने से मना कर दिया। इसलिए हेलीकॉप्टर भी दूसरों की खोज में चला गया। अंत में जब मंदिर लगभग पानी के नीचे ही डूब गया तो पुजारी ने अपना सिर ऊपर रखा और शिकायत करना शुरू किया, हे भगवान, तुमने जीवन भर मैंने तुम्हारी पूजा की और तुम पर मैंने विश्वास बनाए रखा, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे पागल, मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया था। पहले मैंने ग्वाले के रूप में तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहा, फिर एक नाव वाले को लेकर आया था और अंत में तो मैंने एक हेलीकॉप्टर भी भेजा था। अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो भाई इसमें मेरा क्या दोष है? पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। उसे भगवान ने एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। कहानी खत्म। देखें क्या सबक सीखा हमने इस कहानी से, इस अनमोल कहानी से। यही कि जीवन में कितने ही अवसर बिना बताए अनजाने में हमारे पास आते हैं, मगर हम उन्हें पहचानने में विफल रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि जिंदगी में हमें सफल होने का कभी अवसर ही नहीं दिया। थिंक इट ओवर। जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी को हम अगले सेशन में सुनने जरूर जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आस्तिक और नास्तिक की बात निकली है
तो हमारे जो कराड़ साहब के पूज्य जो है स्वामी विवेकानंद, जो हमेशा कहा करते थे कि नास्तिक वो नहीं है जिसका ईश्वर पर भरोसा ना हो, नास्तिक वो है जिसका स्वयं पर भरोसा ना हो। अगर स्वयं पर भरोसा नहीं तो हम ज़रूर नास्तिक हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज क्योंकि भारतीय संविधान दिवस भी है, तो यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले अवश्य बताना चाहिए कि हमारे बिलवेड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री राहुल वी कराड़ सर शायद भारतवर्ष में अकेले व्यक्ति है जो संवैधानिक मूल्यों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाने के लिए बड़घोष कार्य कर रहे हैं। आपको पता होगा अभी 13 जो हमारी भारतीय छात्र संसद है वो 11, 12 और 13 जनवरी 2024 को होने जा रही है। इससे गत जून 15, 16 और 17 को 10, 11 और 12 जनवरी को 2024 को 13th भारतीय छात्र संसद होने जा रही है। और 15, 16, 17 जून 2023 को तो एक रिकॉर्ड हुआ था। फर्स्ट एवर नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस was conducted in Mumbai in Geo Convention Center। पूरे भारतवर्ष से लगभग 2200 MLAs और MLCs सारे प्रदेश और सारी यूनियन टेरिटरी से वहाँ पर आए थे। इट वॉज अ फिनोमिनल थिंग कि पहली बार MP तो हमेशा मिलते ही है, लेकिन MLAs अलग अलग प्रदेशों से वो कहाँ मिलते हैं, और ये सिर्फ श्री राहुल वी कराड़ इनके महत् प्रयास से हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से हम श्री राहुल वी कराड़ जी इनका भी हम स्वागत करते हैं इस उपलक्ष्य में। और हमें अभी भी याद है कि भारत, जब राहुल कराड़ साहब ने कुछ साल पहले कहना शुरू कर दिया था भारत, तो हम सब लोग भी सोचते थे कि क्या बात करते हैं, लेकिन हमें अभी सबको पता है कि धीरे धीरे आपने देखा कि अभी इंडिया पीछे छूटता जा रहा है और अभी भारत ने वो जगह ले ली है। तो ये जो दृष्टि है, ये जो विजन है, इसके लिए पुनः हम एक बार राहुल जी का स्वागत करते हैं कि यस, रिस्टोरिंग इंडिया टू इज ग्लोरी भारत। थैंक यू वेरी मच सर। हमारी परंपरा के अनुसार हम अभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। सो मै आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर टू काइंडली फेलिसिटेट अवर गेस्ट स्पीकर टुडे, डॉक्टर जगदीश हिरेमठ जी। तालियां की गुंजार बजती रहनी चाहिए जब हम अतिथियों का स्वागत समारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम और डॉक्टर जगदीश हिरेमठ साहब के बीच में कोई फासला नहीं बनाए रखते, क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए एक एक क्षण हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उनको बुलाए इसके पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय करा दें। डॉक्टर जगदीश हिरेमठ इज़ अ वर्ल्ड फेमस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। करंटली ही इज़ डायरेक्टर कैथ लैब रूबी हॉल क्लिनिक पुणे। He is also recognized as a world-renowned expert in coronary interventions. Dr. Hiremath's journey in cardiology began with his medical education at B.J. Medical College in Pune, where he earned his MD degree. He then pursued his DM in cardiology at KEM Hospital in Mumbai, where he received a gold medal for his outstanding academic performance. Then he underwent specialized training in coronary angioplasty in Melbourne, Australia. He is also an expert in the management of complex coronary artery disease and has pioneered several innovative techniques in this field. Dr. Hiremath has held various prestigious positions, to name a few: Director of Non-Invasive Cardiology, Director of CCU at Ruby Hall Clinic, Chief of Cardiology at Pune Hospital, Fellow of the American College of Cardiology, and also served as the President of the Cardiology Society of India. Dr. Hiremath's contribution to the field of cardiology have been recognized by numerous awards and accolades: recipient of Gentleman of the Year Award, Son of the Soil Award. His unwavering dedication to patient care and his commitment to advancing the field of cardiology have made him a true inspiration to his peers and patients alike. जब भारत को कोरोनरी डिसीज, हार्ट डिसीज़ का कैपिटल माना जा रहा है, तो एक बहुत भाग्य की बात है कि हमारे पास
ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट है, इस प्रकार के एक्सपर्ट्स मौजूद है जो हमें इसमें गाइड कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विद अ राउंड ऑफ ह्यूज अप्लॉज, प्लीज वेलकम डॉक्टर जगदीश हिरेमठ. असं बोलू. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. नमस्ते सर. Dharani sir. Today I think is 18th or 19th year in succession, and this succession was not broken by Corona also, because we had a Zoom lecture that time for all of you. कधी कधी मला असं टेन्शन येतं की बरोबर होत नाही म्हणून परत परत बोलवतात की काय असं वाटतं. But it's such a pleasure and of course a great honor to be with you all. Trying to teach the teachers is something which is a rare honor, I think. Initial few years I went on with hypertension, cholesterol, medical things. Then there was flights of imagination with various topics like God and, shall we say, middle path and other things. But now, this time, Vishwanathji Karad had given me a task of talking about Sant Dnyaneshwara. I took on that task for about first 3 months, sir. But I thought my efforts were too inadequate to imbibe somebody's great work that was done. But I am at it. In the years to come, I shall come with full preparation on that topic. So today, I thought we'll go back to prevent heart attack, because it's a common, it's a menace actually, and it's getting worse as time goes by. And of course, the audience over a period of 18 years might have changed. So let me go ahead and address prevent heart attack as. इथे आल्यानंतर जे आदरातिथ्य असतात त्याच्याकडे सुद्धा मी आय लुक फॉरवर्ड टू इट. सरांबरोबर बसणं, गप्पा मारणं, त्या माहोलमध्ये राहणं, आणि खरं सांगायचं ड्रायफ्रुट्स पण खूप छान असतात त्यामुळे. आणि हे जे फेलिसिटेशन आहे, इट्स बिकम पार्ट ऑफ माय लाईफ. आणि आमच्या घरचे पण, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दीज इमेजेस दॅट कम होम अँड दे आर डेकोरेटेड वेल ॲट होम. आणि ती भावना घेऊन जायला लागतं माझ्या इथून मला, सो दॅट आय रिमेन वेल फॉर द होल इयर अँड देन कम टू यू विथ समथिंग न्यू एव्हरी इयर. Atherosclerosis is the disease. Slide दिसतात का? This was my first slide. This was second. This was where the felicitation part. And now we are on to atherosclerosis. या आजाराचं नाव लक्षात राहिलं नाही तरी चालणार आहे. But what it does is, when it attacks the heart, it causes heart attack. Brain causes brain attack, म्हणजे paralysis. Kidneys can fail because of the atherosclerosis. हातापायाला gangrene होऊ शकतं. And male sex organ, if it gets affected, it leads to impotence. So असा सगळीकडे होणारा हा आजार आहे. त्यामुळे we have to know how to prevent it. If a critical narrowing takes place, say in the brain artery, treating with an angioplasty is a different story. But for us, we have to start preventing if you are not already doing it from today, and keep preventing, keep the fight on, because on one side, the chances of somebody getting atherosclerosis keep going on as years go by. So we have to have this effort all the time. At every age, we should know, we'll come to know what to do. But the effort should be on to prevent atherosclerosis. And of course, if disease takes place, tertiary care doctors like us are available. It's a very
important transition in the cardiovascular morbidity mortality. खूप इंटरेस्टिंग स्लाइड आहे की विथ ॲफ्लुअन्स ऑल दीज थिंग चेंज की सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ अफ्रिकन नेशन अंडर डेव्हलप्ड टुडे it will be at number 1. Like there will be more infections, typhoid, malarias.